ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। वो आपको बजट पर संबोधित करेंगे। उनका एक बयान आपको मिल जाएगा उनके वक्तव्य के बाद। उसके बाद में अमिताभ दुबे जी जो चिदम्बरम जी कहने वाले हैं उसका सारांश हिंदी देंगे। उसके बाद चिदम्बरम जी आपके सवाल लेंगे। मैं चिदम्बरम जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। Good evening to all of you. The Finance Minister has presented the budget for 2026-27. I have a brief opening statement, and then, if you wish, we will take a few questions. Every pre-budget must be astonished by what he or she heard in the Finance Minister's speech to Parliament today. I accept that a budget is more than a statement of annual revenues and expenditure. In current circumstances, the budget speech must lay out a narrative that addresses the major challenges outlined in the economic survey released a few days ago. I'm not sure if the government and or the finance minister had read the economic survey 25-26. If they had, it appears that they have decided to discard it completely and fall back on their favorite pastime of throwing words, usually acronyms, at the people. I can count at least 10 challenges identified by the economic survey and many acknowledged knowledgeable experts. 1. The penal tariffs imposed by the United States have created stress for manufacturers, especially exporters. 2. Protracted trade conflicts that will weigh on investment. 3. The growing trade deficit, especially with China. 4. The low gross fixed capital formation, approximately 30%, and the reluctance of the private sector to invest it. 5. The uncertain outlook for flow of FDI into India and the persistent outflow of FPI for the last several months. 6. The agonizingly slow pace of fiscal consolidation and the continued high fiscal deficit and revenue deficit, contrary to the FRBM. 7. The persistent gap between officially announced inflation numbers and the ground reality in terms of bills for household expenditure, education, healthcare, and transport. 8. The closure of lakhs of MSMEs and the struggle to survive of the remaining MSMEs. 9. The precarious employment situation
especially youth unemployment. 10. Growing urbanization and the deteriorating infrastructure in urban areas, municipalities, and corporations. Now, there are many more. For example, the depreciation of the rupee. None of this was addressed by the finance minister today. None, not one of the challenges were addressed by the finance minister. It was therefore not surprising that the applause was perfunctory and most of the audience tuned out in quick time. In fact, I noticed that the telecast by Sansad TV switched off a few times. Even by an accountant's standards, it was a poor account of the management of the finances in 2025-26. Revenue receipts were shot by rupees 78,086 crore. Total expenditure was shot by rupees 1,503 crore. Revenue expenditure was shot by rupees 75,168 crore, and capital expenditure was cut by 1,44,376 crore. This is between the center and the states. Not a word to explain this miserable performance in revenue and expenditure. Actually, the center's capital expenditure has fallen from 3.2% of GDP in 24-25 to 3.1% in 25-26. Capital expenditure has actually fallen in the year that concluded. In revenue expenditure, the cuts have fallen in heads that concern the common people. I'm giving you some examples. Rural development, 53,067 crore is a cut. Urban development, rupees 39,573 crore. Social welfare, rupees 9,999 crore. Agriculture, rupees 6,985 crore. Education, rupees 6,701 crore. Health, rupees 3,686 crore. Funds have been cut in crucial sectors and programs. Expenditure on the much vaunted Jal Jeevan mission, you can't believe this number, was cruelly cut from 67,000 crore to a mere 17,000 crore. 50,000 crore has been cut in one program. In 26-27, it has been boosted in the budget to 67,670 crore, but what credibility does the number have? From 67,000, you cut it to 17,000, and you boosted it back to 67,000 crore. These numbers have no credibility at all. After the months-long exercise, the RE of fiscal deficit has adhered to the BE at 4.4%. And the projection for 26-27 is that fiscal deficit will fall by a meager 0.1%, from 4.4 to 4.3. The revenue deficit will remain stationary at 1.5%. It's certainly not a bold exercise in fiscal prudence
and fiscal consolidation. The most serious criticism of the budget speech is that the finance minister is not tired of adding a number of schemes, programs, missions, institutes, initiatives, funds, committees, hubs, etc. These are not my words. These are words in her speech. She has peppered her speech with schemes, programs, missions, institutes, initiatives, funds, committees, hubs. I counted at least 24. I leave it to your imagination how many of these will be forgotten and vanish by next year. Lastly, on part B of the speech, months after passing of the Income Tax Act 2026, that will come into force on April 1, 2026, the finance minister has tinkered with some rates. While the impact of the numerous minor changes has to be examined carefully, it must be remembered that the overwhelming majority of the people have no concern with income tax or income tax rates. As far as indirect taxes are concerned, the average person will be concerned with only paras 159, 160, and 161, where minor concessions have been given in personal baggage imported from abroad, and I welcome these minor concessions. Our verdict is that the budget speech and the budget failed the test of economic strategy or economic statesmanship. This is neither economic strategy nor economic statesmanship. चिदम्बरम जी, चिदम्बरम जी का बयान अंग्रेजी और हिंदी में दोनों आपको आपके व्हाट्सएप और ईमेल में मिल गया होगा। तो अगर अभी आपके कुछ सवाल हैं तो आप हम पूछ सकते हैं, आपको मिल गया होगा, 1-2 मिनट में मिल जाएगा। अमिताभ। थैंक यू जयराम जी और चिदम्बरम जी। मैं चिदम्बरम जी के इस बयान को संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये ना जीडीपी ग्रोथ, ना इन्वेस्टमेंट और ना रोजगार के लिए कुछ खास करता है। काश निर्मला सीतारमन जी ने अपना ही इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता जो 2 दिन पहले रिलीज किया गया था। उसमें देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं, विस्तार से उसका उल्लेख वहां उन्हें मिलता। इनमें से 10 मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। पहला है जो यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा 50% टैरिफ जो हमारे देश पे लगा हुआ है, जिसका भारी असर हमारी एक्सपोर्ट्स पे पड़ रहा है। दूसरा, जो ट्रेड वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों के कारण अब हर पूरे विश्व में फैल रहा है, उसका भारी असर हम पे पड़ रहा है। तीसरा, चीन के साथ जो ट्रेड डेफिसिट हमारा लगातार बढ़ता गया है और इस साल 116 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा है, तो पूरी तरह इंपोर्ट्स चीन से भारत आ रही हैं। चौथा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट है जो 30% पे कई सालों से अटका हुआ है और जो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। आपको पता है कि काफी बहुत सारे सालों से हर बजट में कोई ना कोई घोषणा हुई है, पीएलआई, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगातार 12% जीडीपी के रहा है। तो उनकी नीतियों का कोई इंपैक्ट नहीं है। तो हमें देखना है कि इस बार जो घोषणाएं हुई थी उनका क्या इंपैक्ट होता है। सिर्फ घोषणा पे चलने का से कुछ नहीं बदलेगा। इससे जुड़ा हुआ है एफडीआई और गिरता हुआ रुपया। लगातार रुपया गिरता हुआ दिख रहा है। एशिया का सबसे कमजोर करेंसी माना जाता है और इसका मुख्य कारण है कि पैसा बाहर जा रहा है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक जमाना होता था कि पैसा भारत में आता है, लेकिन नेट एफडीआई अब बढ़ चुका है, नेगेटिव हो चुका है। और इसका कारण है, पहले जो निवेशक थे, इन्वेस्टर्स थे, वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। आपको मालूम है कि हर साल 4000 से 5000
हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, डॉलर मिलियनेयर्स दुबई, सिंगापुर, लंदन में अपना रेजिडेंसी लेते हैं। अब उनके साथ उनका पैसा भी जाने लग गया है। जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस साल 24 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रुपया लगातार गिरता हुआ दिखता है। जो बजट अभी जो प्रेजेंट किया गया उसका फिस्कल डेफिसिट 4.4% है और ये जो 3% का टारगेट था उससे बहुत दूर है अभी भी। सातवां कारण है कि जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि जो इन्फ्लेशन रेट, जो ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट जो डिफ्लेटर के माध्यम से बताया जा रहा है 0.6% बताया जा रहा है और इसी के बल पे हमें बताया जा रहा है कि ग्रोथ रेट 7.4% है। अब आप मुझे बताइए इस देश में कौन सा घर है, कौन सा व्यक्ति है जिसका इन्फ्लेशन रेट 0.6% है, जिसको शिक्षा पे खर्चा करना है, स्वास्थ्य पे खर्चा करना पड़ रहा है, यातायात पे, खाने पीने पे 0.6% किसका अनुभव है, ये हमें दिखाना चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन रेट इससे ज्यादा है इसका मतलब यही है, हो सकता है कि जो असली जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.4% से कम है। एक और है जो सूक्ष्म और लघु उद्योग लाखों में बंद होते जा रहे हैं। एक कारण है चीन से लगातार इंपोर्ट आता रहता है और जो सरकार की सारी जो घोषणाएं हुई हैं उनका कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है एमएसएमईज के लिए। बढ़ती बेरोजगारी के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बजट में कुछ नहीं है। और लास्ट में जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है, कुछ ही दिन पहले हमने देखा नोएडा में क्या हुआ, एक युवक ने अपनी जान खोली क्योंकि इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें खराब हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स खराब हैं और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो फोर्सेज हैं उन्हें जिनको उन्हें डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए आए थे वो भी नाकाम निकले। तो इन सब चुनौतियों के बारे में इस बजट में कुछ नहीं है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो इस बजट से साफ दिखती हैं और इसमें गरीब और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है इतना ही नहीं, उनके खिलाफ जो आर्थिक वार है जो सरकार का है अपनी पूंजीपतियों के पक्ष में और मिडिल क्लास और गरीबों के खिलाफ, उनके बजट की जो अलग अलग हेड्स में जो कटौती हुई है 25-26 फिस्कल ईयर में वो साफ दिखता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में 53,000 करोड़ काटे गए बजट और एक्चुअल के बीच। शहरी विकास में 40,000 करोड़, सामाजिक कल्याण 10,000 करोड़, कृषि 7,000 करोड़, शिक्षा 6,700 करोड़ और स्वास्थ्य 3,700 करोड़। तो और जो जल जीवन मिशन है जो एक इस सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन तथाकथित जो उनका बताया गया है उसका बजट 67,000 करोड़ था और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन 17,000 करोड़ निकला है। तो आप साफ देख सकते हैं कि बजट जो काटा जा रहा है कौन सी मिनिस्ट्रीज और कौन से हेड्स का काटा जा रहा है। तो इनमें मैं यही कहूंगा कि ये जो बजट है हमारी अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ नहीं करता, ना जीडीपी ग्रोथ के लिए, ना निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए और ना बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, और इसलिए ये पूरी तरह फेल है। धन्यवाद। Sir, this is Prashant from Hindustan Samachar. Sir, after the budget presentation, Prime Minister Narendra Modi said that this budget is path-breaking reforms that have been carried out in budget, given open sky to the youth. And he said that India's role as the trusted democratic partner and trusted quality supplier of the world. What is your stand on it, sir? The budget opens up vast opportunities for the youth, and this is a youth-focused budget. Mr. G is asking, what is your stand? Now, given one example of last year's budget, they initiated a PM internship program last year.
1,65,000 offers were made by companies, but only 20%, that is about 33,000 people, accepted the offer because the conditions were so unattractive. And after 33,000 which accepted the offer, 6,000 dropped out. So eventually, 1,40,000 offers were unattractive. So he must tell us which sector, which job is available to the youth. The unemployment rate for youth unemployment is close to 17%. Therefore, where does this budget create jobs? Where does this budget tell young people these are the jobs? I'm giving you an example of last year's budget program, and let's see what happened in this year's budget programs. Good evening, sir. This is Mohit from ABP News. Sir, my question is about Trump. India will buy oil from Venezuela. Why is Trump announcing this? Will Trump decide from whom India should or should not buy oil? I'm not Caroline Leavitt, the press secretary of President Donald Trump. Please ask about the Indian budget. Sir, So this time the government hasn't addressed much of the environmental concerns, but there is one big announcement which they have done is about the rare earth corridor. Rare earth corridor, which is being announced by the finance minister in this budget. Kerala chief minister has expressed a concern regarding this, saying that it will give a push to the private portfolios, and also this is going to dilute the environmental clearances. Do you agree with this statement? Are you also concerned about this new announcement which the government has done? See, I'm never impressed by an announcement. I want to see the scheme, the conditions of the scheme, what is the amount provided for the scheme, and the technical data about the scheme. I don't want to comment upon an announcement. What is the use of an announcement unless you actually see the details of the scheme? Then I will comment. चिदम्बरम साहब, बजट पर आपने बोला है, कुछ समय पहले ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था, जिसका समर्थन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया था। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं आज के बजट के लाइट में कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्या आपकी राय में भारतीय अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है? No. Is the dead economy the subject matter of today's budget? The context in which President Donald Trump made that comment, the context in which Mr. Rahul Gandhi made the comment, I'm not aware. So I can't comment on either statement. Are you aware about the Indian economy? In your opinion, whether Indian economy is dead or not? You ask me about the budget, I'll tell you. This is a budget without an economic strategy, without an economic statesmanship. आज के बजट में सर, मैं दूर दराज गांव से आता हूं, तो गांव का व्यक्ति बजट से कुछ उम्मीद करता है। जब बजट आता है तो उम्मीद होती है कुछ आएगा। और आज 80 करोड़ का वो देश है हमारा जिसमें 5 किलो अनाज के लिए लोग पीड़ित हैं। अभी इस साल सरकार ने अनाउंस किया है कि टीसीएस और टीडीएस को कम किया है। किन के लिए? जिनके बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाएंगे। अब विदेश पढ़ने के लिए जाने के लिए तो वो 80 करोड़ सुपर वाले लोग हैं। 6701 करोड़ रुपए इन्होंने शिक्षा का बजट कम कर दिया है।
6701 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट कम कर दिया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये देश सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए बचा है, गरीबों के लिए नहीं बचा है? saying is that she is facilitating youth to go abroad and study while she is not making adequate allocations for education. तो सवाल क्या है? सवाल See, this is, I understand the question. This is education, what the central government will spend on education. What this number I read, the cuts in the budget expenditure is about central government expenditure on education sector in India. Those who go abroad will go on their own money or on scholarship or on support from relatives or friends. This is cut in budget is to do with Indian government spending money on education sector in India. I am also asking the same questions. Rural middle class families no have money for foreign countries. They need minimum fees and minimum budget schools. We are not talking about this. This number is not about foreign studies. This number is about Indian education. Rural families, poor families, middle class families do not have money to go abroad. I accept it. Even many upper middle class families are dropping their idea of educating abroad because the rupee is depreciated and Trump has made visas more difficult, student visas. So that is not the subject matter of this today's budget. सर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो जब से एनडीए सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, डिफेंस के सेक्टर में यूपीए सरकार ने बहुत कम बजट रखा था, तमाम चीजों एक तरीके से उतना मेहनत नहीं की, उतनी कोशिश नहीं की, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उसने डिफेंस सेक्टर में काफी बढ़ोतरी करी है, इंक्रीजमेंट किया है बजट में और डिफेंस सेक्टर को पहले से बहुत मजबूत कर दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? You are asking about comparative expenditure in UPA and comparative expenditure in NDA on the defense. Let me tell you the numbers. Defense expenditure as a total expenditure, as a proportion of total expenditure was 16% in 2013-14. Now, in 25-26, it has come down to between 14 and 14.5% as a percentage of total expenditure. As a percentage of GDP, we had touched 2.25% or 2.3% in 2013-14. This year, it is just below 2%. So either as a proportion of GDP or as a proportion of total expenditure, it has come down between UPA and NDA. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी अभी चिदम्बरम साहब ने कहा है कि जो जीडीपी का हिस्सा है या कुल मिलाकर सारे सरकार का जो खर्च है जिसका उसका हिस्सा है, ये दो आंकड़े हैं। इस दो आंकड़े के अनुसार यूपीए में जितना खर्च रक्षा क्षेत्र में हुआ था उसकी तुलना में एनडीए के समय कम हुआ है। समझ गए? जीडीपी का हिस्सा अगर आप लें या सारे सरकार खर्चा का हिस्सा लें और दोनों कार्यकाल की आप तुलना करें तो यूपीए के समय रक्षा के क्षेत्र पर हिस्से के अनुसार रक्षा पर ज्यादा खर्च हुआ एनडीए की तुलना में।
Sir, my question is to both Chidambaram sir and sir. My question is to both of you, Chidambaram sir and Jairam Ramesh sir. Sir, do you think this union budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman masks a fragile household finance dynamic of the country, and why? Could you explain it? As far as I know, the last numbers released by the household survey, that financial savings of household have come down and household borrowing has touched an all-time high. I think household debt has touched 51.7% or so, and correspondingly, household savings have come down. The finance minister did not even mention these two numbers. Whether she's aware of these two numbers and what her comment on these two numbers, I don't know. You should ask her when she addresses a press conference. घरेलू बचत दर में भारी कटौती हुई है और घरेलू ऋण बढ़ा है। ये दोनों आंकड़े महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिसका नजरअंदाज वित्त मंत्री किया है इस बजट में। घरेलू बचत अगर हर साल घटता जाएगा तो निवेश की क्षमता कम होती जाएगी। निवेश तभी हो पाएगा जब बचत होता है। तो बचत का दर गिर रहा है जैसा कि अभी चिदम्बरम जी ने कहा, और घरेलू ऋण ज्यादा बढ़ रहा है। तो घरेलू हकीकत को मद्देनजर रखते हुए यह बजट तैयार नहीं किया गया। सर budgetary cut ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट में 39,000 53,000 ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ बजटरी कट इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। बट सरकार ने जो आज घोषणा की है उसमें जी राम जी बिल जो मनरेगा को रिप्लेस किया है, they have increased the budget of G Ramji budgetary allocation as compared to Manrega last year, sir. How do you see this? Let's look at the numbers. In Maganrega, last year, the budgeted expenditure was 86,000 crore and the revised expenditure is 88,000 crore, a little more or less the same. On G Ram G, I mean, I don't know what G Ram G means. It is the substitute program for Maganrega. Where is the allocation? Allocation is what? Allocation is 95,000 crore. So on 86,000 to 88,000 crore, they provided an average employment of 50 days a year. Last few years, they are providing an average of employment for 50 days a year per household after spending 80,000 crore. Now today, by spending 95,000 crore, how does the government promise 125 days? 125 days must require 2.5 times the last year's allocation. 50 to 2.5 is 125. So 88,000 crore must go up to almost 2 lakh crore before you provide 125 days employment. यही नहीं, एक और मुद्दा है, इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये बात सही है कि बजट में जी राम जी के लिए 95,000 करोड़ रुपया का आवंटन हुआ है, पर आप ये याद रखिए कि 60% खर्चा केंद्र सरकार की भागीदारी है
और 40% राज्यों से आएगा। अगर राज्यों के पास धनराशि नहीं है, राज्य इस पर निवेश नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, तो सरकार तो अपने मन में नहीं खर्च कर सकती। पहले से ही कहा है प्रधानमंत्री ने, 60-40 के आधार पर ये नया कानून लागू होगा, नया अधिनियम लागू होगा। मनरेगा में तो नहीं था, अभी तो 90-10 था, अभी तो 60-40 हुआ है। तो अभी ये जानना अभी बहुत समय लगेगा, किस आधार पर राज्यों को आप आवंटन करेंगे, क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, क्या सूत्र के आधार पर अलग अलग राज्यों को कितना पैसा दिया जाएगा, क्या वो राज्य ऐसे स्थिति में है खर्च करने की। मिसाल के तौर से राजस्थान को इस नए अधिनियम लागू करने के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपया अतिरिक्त इस साल देना पड़ेगा। क्या राजस्थान की सरकार के पास इतनी धनराशि है? और सभी राज्यों के पास। तो ये सब आंकड़ों देना आसान है, बजट में एक आंकड़ा प्रकाशित करना आसान है, पर जैसा कि अभी चिदम्बरम जी ने कहा, घोषणा से मत जाइए, मुझे दिखाइए डिटेल क्या है, इस नए अधिनियम के डिटेल क्या है, राज्यों के साथ आपने मशवरा की है कि नहीं, किस आधार पर, किस फॉर्मूले के आधार पर, क्या सूत्र आपने अपनाया है कि अलग अलग राज्यों को इतना पैसा मिलेगा, वो डिटेल इस बजट में बिल्कुल है नहीं। बड़ा गंभीर सवाल है सर कि बजट में जो अनुमानित खर्च है यानी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर वो सबसे ज्यादा ब्याज पर है, 14,03,000 समथिंग करोड़। सभी सरकारें ये मानती हैं कि कर्जा लेना पड़ता है सरकारों को चलाने के लिए, विकास ज्यादा करने के लिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी और आप उसके पूर्व वित्त मंत्री होने के नाते इस विषय पर क्या मानते हैं सर कि कर्ज लेना और उसके बाद फिर जीडीपी से ही और लोगों के पैसे से ही ब्याज चुकाना? That's a too simplistic statement. As long as the debt to GDP is under control, in borrowing and spending. Borrowing is equal to fiscal deficit. Every government has borrowed and spent. So there's nothing wrong with the fiscal deficit, nothing wrong with borrowing and spending, but the borrowing and spending as a proportion must come down to 3% of FRBM. Only in 2007-8, we achieved 2.5%, well under the FRBM limit of 3%. Today, it is 4.4%, and it will go down to 4.3% next year. By the time it goes down to 3% at this rate, 0.1% a year, it will take 13 years. Therefore, we are saying debt to GDP ratio may come down, but you should do fiscal consolidation quite rapidly. You can't do it 0.1% a year. Good evening, sir. I'm Sahil from ANI. Do you believe this budget has left, has snubbed Tamil Nadu or your, which is your home state as well? Because barely 2 mentions in the budget, rare earth corridor and high-speed rail, and Thirukural didn't even make it to this speech. Do you think it has been snubbed? Thank you. See, he heard so many snubs every day. Every time he visits Tamil Nadu, he snubs the Tamil Nadu government, Tamil Nadu people. So what does it matter, one more snub? It doesn't matter at all. The BJP is, according to me, irrelevant in Tamil Nadu. And what is this rare earth
I mean, who understands rare earths in Tamil Nadu? How many people's lives will be affected by the rare earths exploration program? These are all high sounding words. But the fact is that he is denied funds to Tamil Nadu. The Tamil Nadu government has documented it. And he is not spending the money that he promised for central sector projects. For example, the AIMS in Madurai were announced several years ago. They are now talking about building an AIMS for Ayush. Good luck, wherever it's located. But what about the AIMS in Madurai? Why is it not functional? Tiruvallur also did not make. I mean, I'm on behalf of Tiruvallur, I thank them for not mentioning him. There has been no mention of Chabar port, though no funds have been allocated to Chabar port. Do you think that India is quietly bowing to under this US pressure? I don't know whether the defense budget has a line entry on Chabar. I don't know. I have not read every line of the defense budget. I don't know. But it's possible you are right. Have you read the defense budget line by line? It's sad. It's sad if Chabar, which means they are succumbing to somebody's pressure. If you are right in your statement, the government of India is succumbing to somebody's pressure. Thank you. Huh? I don't know that. Which means they have succumbed.